Hi, Jai Hind, guys. So आज का जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली आई वांट टू टेल यू कि आप मान लो गड्डी देख रहे हो फॉर योर ओन यूज राइट अभी इंजन परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी ऑफ द व्हीकल इसके अलावा आपको दो तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी एंड जो कभी कभी माइंड से आउट हो जाता है यू गो एंड बाय ए व्हीकल उसमें वो पर्टिकुलर फीचर नाउ आई एम नॉट वेरी मच स्ट्रेसिंग ऑन फीचर ऑफ ए व्हीकल क्योंकि मेन मुद्दा है कि गाड़ी कैसी है सेफ है या इंजन कैसा है बढ़िया है कि नहीं है वही देखना चाहिए लेकिन फीचर के बारे में देर आर सर्टेन फीचर आई गेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर डे टू डे कंफर्ट एंड सेफ ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल तो इन मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो अभी मार्केट में उपलब्ध है आप start with the entry level vehicles like the Alto or the Espresso, and if you climb up the ladder, hatchback ले लो या compact SUV ले लो या you take the full size SUV. तो कुछ features है these are very important and आप एवॉइड करना उस गाड़ी को उस मॉडल को जिसमें ये फीचर देता नहीं है सपोजिंग यू आर लुकिंग फॉर एन बेस मॉडल और द सेकेंड बेस मॉडल ऑफ ए कार नाउ जनरली बेस या सेकेंड बेस मॉडल में कुछ कुछ फीचर्स मैन्युफैक्चरर्स देते नहीं है एंड दैट इज which are actually really required for safety reasons. So the number one feature which is required for safe driving of a car is rear wiper and washer and rear defogger. ये दो चीज जिस मॉडल में मिलती है उस मॉडल की तरफ आपको ध्यान देना है अगर बेस मॉडल मोस्ट ऑफ द vehicles they do not provide this luckily fortunately there is one company that I can cite Skoda Kushaq has come up with this right from the base model they are providing this very important feature of rear wiper and washer as well as the rear defogger but in many vehicles you will not find that. Number two in my list is the parking sensors. Okay, base model में काफी models of काफी vehicles they do not provide rear view camera. If the parking sensors are not there, you can perhaps install it after market में जाके. लेकिन rear wiper, washer and defogger you cannot install it. So parking sensors अगर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा ठीक है front parking sensors are also important, but to some extent it can be ignored if your car is not very big. अगर आपका गड्डी बड़ा है, then front parking sensors are also important. Now, number three comes अंदर में सीट की headrest. तो सीट headrest जो होता है, वो बेस मॉडल्स में, स्पेशली इन द एंट्री लेवल एंड व्हीकल्स एंड थोड़ा सा जो एक स्टेज ऊपर की व्हीकल में दे डू नॉट प्रोवाइड adjustable rear headrests which I really wonder why they do so क्योंकि if you look at even the Honda cars like the Honda City I don't know whether they have introduced it in the recent update but Honda City and Honda Judge Honda Judge which was a decent compact crossover उसमें भी उन्होंने रियर सीट में हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं देते थे आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई द मैन्युफैक्चरर्स डू सो इवन द entry level vehicles the front seats में headrests are also sometimes given fixed like in the recent teaser of the facelifted Tata Tiago I have seen the photographs कि जो front and rear headrest है वो fixed है now I want to ask the company, in this particular case for Tata, and also companies like Maruti and Honda and Hyundai, जो what will be the cost difference if you provide a adjustable headrest and instead of a fixed headrest? Now, in the fixed headrest, वो भी क्या करते हैं थोड़ा सा इतना सा इतना सा उठा देते हैं जहाँ पे बंदे को बजना है so it does not support your head. Rather, when you lean back, then it
hits your neck. And in case of any eventuality, एक frontal crash में जब force आता है, then you tend to hit that your seat back, and your head tilts like this, and you might damage your spinal cord, or that neck area, which is very very serious. So guys, remember this thing. जो adjustable headrest is something which a consumer like us should demand from the manufacturer. नंबर 3 हो गया, एसी तो मोर और लेस सब गाड़ी में आ जाता है, ठीक है. नाउ इन सम कार्स, especially the cars by the Tata company and Mahindra also, and also in Skoda, they provide AC, and they don't only provide AC, they provide automatic AC, uh, like in Kushak and Kailak and Slavia, and also in the Volkswagen group. बट वो टच बेस्ड है. आई कैन अंडरस्टैंड द रीजन, बिकॉज टच बेस्ड होने से उसमें क्या होता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी डाउन होता है. एंड इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फिजिकल बटन्स फॉर व्हिच द vendors which supply the system, they will be charging a little bit more. But by doing so, what is the how much you are saving? I really wonder. And if you अगर आप लोग बटन या टॉगल स्विच के साथ एसी कंट्रोल्स देते हो, then and you can charge this to the customer. How much it will cost? 500,000, 2,000 rupees. So if I am buying a vehicle of say 7 lakhs or 8 lakhs, तो 2,000 रुपया हम दे सकते हैं. So I only want that to spread this awareness कि task based AC controls are a hazard and can be a big reason for any unwarranted incident, because the moment you want to control that, आप जो रास्ते पे सीधा देख रहे हो, वहां से आपको जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा हट जाता है, एंड दैट मोमेंटरी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन may result in a serious accident or incident. Right now, people are very fond of black and dark colored color cars because they look sexy. Yeah, they look damn good, especially on bigger vehicles like Creta and all. Dark colors vehicles में और भी एक चीज है कि situations where there is a lot of fog, or जब अंधेरा होने वाला है, when the people are not putting on their lights, okay, and if you are uh, traveling in a corner in such a place where थोड़ा सा direct vision का problem है, then these dark colored cars are not easily noticeable. Okay? Now, with this dark color cars and the dark edition and the night editions of the cars, like the Tata companies and the Hyundais, they make it. What they do, they make it completely black. Everything, outside and inside. Outside, में even the wheels also are made black. Now, इंडिया में डस्ट बहुत है. अब व्हील जो होता है उसमें आई मीन द एलॉयज में अगर डार्क होगा तो उसमें जब डस्ट या मड चिपकेगा वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा. It will be more noticeable. So it will be up to you to clean it, nicely. So this is one thing. Now, if you come inside, then this dark uh, cars or the night edition cars, they've got everything in black with little, stitches and piping of different shades like red, most prominently red, and silver or very glittering yellow. So that may look good. Okay, ये तो सबका अपना अपना विचार है क्योंकि looks are subjective. They say, but it makes the cabin so claustrophobic. Now, if you are eyeing for a big car like a Safari, okay, or a Creta, maybe चलेगा फिर भी क्योंकि the glass areas and जो है Creta में those are bigger and quite okay. So you've got a so-called sunroof. It's not a sunroof because during the sun you do not open it. So you can perhaps open it only in the night. So it's better than there's a moon roof. Moon. Now, अब चांद देखने के लिए आप
पेनामिक सनरूफ खोलोगे, ऊपर से गर्मी एंड डस्ट आके आपका जो स्किन है ना, जो मेकअप लिया है बेसिकली योर गर्लफ्रेंड, उनका मेकअप का वो जो सत्यानाश कर देगा, खोबरा जो असली है वो निकल आएगा. तो एनीवे दे मेक एवरीथिंग ब्लैक इंक्लूडिंग द सीलिंग. नाउ आई वांट टू अपील टू दिस कार मैन्युफैक्चरर्स, यार डार्क थीम दे दो, डैश भी डार्क कर दो, लेकिन कम से कम सीलिंग जो है फ्रॉम दैट विंडो लाइन, डोर का जो विंडो लाइन होता है, बेस लाइन, विंडो का बेस लाइन, उसका ऊपर से आप कम से कम उसको तो व्हाइट कर दो. ठीक है. आई मीन इफ यू लुक एट योर ओन होम, घर में आप वॉल में तो कलर दे देते हो, लेकिन सीलिंग तो बराबर व्हाइट ही रखते हो ना, सो दैट यू नो द लाइट रिफ्लेक्ट्स, वो थोड़ा ब्राइट लगे. सीलिंग ब्लैक करने का क्या फंडा है? एंड पीपल आर बाइंग, नो डाउट, बट आई डू नॉट एंडोर्स इट. एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि दिस इज नॉट ए वेरी गुड ऑप्शन. इनफैक्ट मैं एक टाटा नेक्सन ओन कर रहा था, वो फर्स्ट जनरेशन 2017 डीजल में, and I really love this vehicle. So when I wanted to upgrade my car, I went to Tata showroom to look at the Nexon again because they have come up with a new design now, which is जो design अभी अब on road देख रहे हो. तो उसका जो टॉप मॉडल है, टॉप मोस्ट मॉडल, आई जनरली गो फॉर द टॉप मॉडल. उसका अंदर जो है इस एवरीथिंग इज ब्लैक इंक्लूडिंग द सीलिंग. अभी रिसेंट का एग्जांपल ले लो, ये जो वेन्यू नया जो फेसलिफ्टेड वेन्यू आई है, supervised from externally, I am not a fan of that. It's very complicated. But it's the interior way. That is the best in the category. There is no denying the fact. Now, अभी अगर हम N9 लेना चाहते हैं, N9 बाहर से भी देखने में थोड़ा सही है, but the moment I sat inside the car, I found that everything is black, including the roof. I said, no, I'm not going to take it. Only because of the color. So this is another thing जो अंदर में black, बाहर में black. So you just have a look, think about it before you decide to buy a car. Number 3 or 4 is the सीट बेल्ट का जो सीट बेल्ट जो है उसका एडजस्टेबल होना चाहिए, because it's very important. uh, it depends, if you are a short person, you are going to sit a little bit nearer to the steering, right? तो जो सीट बेल्ट है उसको अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाते तो उसका स्ट्रेस ज्यादा होता है. लाइक आई एम नॉट वेरी टॉल पर्सन, आई एम 5 feet and 6 inches. So when I drive my Tushak, I find it little bit stressful for a long trip. The seat belt is not comfortable. But many cars give that seat height adjust. Even now, I can again cite an example of the Tushak, which I drive, that doesn't give. The Volkswagen Tiguan, they do not give. The recently uplifted, facelifted Venue, that also doesn't give. You are spending 16 lakhs, 15, 16 lakhs ex showroom top model for a small, sub 4 meter car, and you are not getting this basic feature. What a joke. Then comes this infotainment systems. Okay, infotainment systems बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं चाहिए, एक कंफर्टेबल साइज चाहिए, एंड जो ऑपरेट करने में सही लगे. बट एट द सेम टाइम व्हेन आई लुक एट दिस मॉडल्स बाय मारुति, ओके, लेट मी नेम देम, स्विफ्ट बोल लो, या तो बेलिनो, या फ्रॉन्क्स, या इवन दैट ग्रैंड विटारा एंड इट्स इक्विवेलेंट इन टोयोटा. इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज तो 9 इंच है अभी, ओके, बट इसका बेजल इतना ठीक है. आई मीन इट रियली, it looks like something which a Nokia phone of 1990s or 2000, early 2000. I really don't understand the logic behind it. And even especially in the Maruti models, I find that the dashboard is not very well designed. I really wonder why the Maruti designers are not giving a very clean and classy dashboard uh, like they give in Hyundai and all those things. So, seat height adjustment of the driver's seat should be made standard across the variants.
Why it should come only from the mid level and always on the top level and not the base level? कितना खर्चा आ जाएगा बताइए? Armrest for the driver at least. Why not? कितना खर्चा हो जाएगा? अरे charge the customer ना. ये छोटा छोटा चीज you should always consider before you decide on a particular car. Another thing is this: the day-night mirror. I remember one car I had that Ritz, which is अभी तो बंद हो गया. Maruti Ritz. It was a good car, fantastic car, everything. I loved the car driving. I drove it for more than 7.5 years. Okay, but top model में, ZXI model में, that IRBM did not have the adjustment for day and night adjustment. A small button there is a tune area. I mean, these are small things which the manufacturers should consider and pass on to the customers. We deserve this much actually, at least. Okay, these are apart from the fact that the safety features of the vehicles like six airbags, ABS, EBD, traction control, six airbags, all these things should come standard across, which are coming now. Okay, but ये जो छोटा छोटा चीज है इसकी बात कोई नहीं करता. So I just thought that let me make one video to share my feeling with you. So if you feel that this video is of any use to you, then do like and share this video with your friends and family if you like it. And in case you have not subscribed to my channel, please do consider subscribing it. थोड़ा encouragement मिलेगी. So that is all. Thank you. यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस एंड साइनिंग ऑफ एरियर ब्लॉग्स.